अमेरिका के व्हाइट हाउस में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जोहरान ममदानी की मुलाकात हुई, जो आज सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। मीडिया वालों ने डोनाल्ड ट्रंप जोहरान ममदानी से ऐसे सवाल के जवाब मांगे जिसमें एक दूसरे के ऊपर वो कीचड़ उछाला था। जैसे कि मीडिया वालों ने सबसे पहले जोहरान ममदानी से पूछा कि आप डोनाल्ड ट्रंप को फैसिलिस्ट बोल रहे थे, तानाशाह बोल रहे थे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? He asked about your comment calling the president a fascist, and your answer was, both President Trump and I have been clear about our positions and our views. Are you affirming that you think President Trump is a fascist? I've spoken about... That's okay, you can just say yes. Okay. It's easier. It's easier than explaining it. I don't mind. आपने सुना कि जैसे ही जोहरान ममदानी उस सवाल का जवाब दे रहे थे तो बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने फौरन एकदम रोक लिया और कहा कि कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है यार, मुझे कोई बुरा नहीं लगा है, आप सिर्फ हाँ बोल दे और हाँ बोल करके खत्म करें। फिर दूसरा सवाल मीडिया वालों ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि आप जोहरान ममदानी को जिहादी बोल रहे थे, आज उसी जिहादी को आपने अपनी बराबर में खड़ा कर रखा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? Mr. President, Republican Elise Stefanik has campaigned multiple times by calling Zohran Mamdani a jihadist. Do you think you're standing next to a jihadist right now in the Oval Office? No, I don't, but she's out there campaigning, and you say things sometimes in a campaign. Isn't that sort of She's a very capable person. But you really have to ask her about that. But I don't particularly. I think I met with a man who's a very rational person. I met with a man who really wants to see New York be great again. And I can say again, because New York was great. When I came down to Washington initially, the city was so hot. It was doing great. We were having some telltale signs of problems. We had a mayor that was not doing a great job, but still, it was moving along, and it went bad. It really went, pretty bad. And I think it's been at lower points, but it went pretty bad. I think he can bring it back. Now, the question is, will he bring it back all the way? Will he bring it back greater than ever before, which is, I guarantee, that's his wish. I think he wants to make it greater than ever before. And if he can, we'll be out there cheering. I'll be cheering for him. तो आपने सुना कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जिसने जिहादी कहा है वो बिल्कुल सरासर गलत कहा है, और जोहरान ममदानी बहुत अच्छा लड़का है और न्यूयॉर्क को जो नया मेरे बनाया है वो हकीकत में वहां के लोगों के लिए काम जरूर करेगा। और जो जिहादी बोला है, जिसने भी बोला है, ये लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये चुनाव की बातें हैं और चुनाव के दरमियान में ऐसी बातें बोली जाती हैं, लेकिन चुनाव खत्म हो गया, ये तमाम चीजें खत्म हो गई। फिर तीसरा जो मेन सवाल है जो जोहरान ममदानी से मीडिया वालों ने सवाल किया, जोहरान ममदानी जो उस सवाल का जो जवाब दिया, हकीकत में उस सवाल का जवाब सुनने के बाद तमाम मुसलमान लोगों, दुनिया के लोगों ने खुशी मनाई कि वाकई में ये हक और निडर है। मीडिया वाले ने पूछा कि आप इजराइल गजा के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कि आप बोल रहे हैं कि जैसे नेतन्याहू न्यूयॉर्क के अंदर आएगा हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे। I would like to ask Mr. Mamdani, you've accused the US government of committing genocide in Gaza while President Trump was working on peace. Why that? I've spoken about the Israeli government committing genocide, and I've spoken about our government funding it. And I shared with the president in our meeting about the concern that many New Yorkers have of wanting their tax dollars to go towards the benefit of New Yorkers and their ability to afford basic dignity. And what we see right now is we're in the 9th consecutive year of more than 100,000 school children being homeless in our city. And there's a desperate need not only for the following of human rights, but also the following through on the promises we've made New Yorkers. And I appreciated the meeting we had and the work that we can do. Do you agree that President Trump did do a peace and he worked hard to make the peace? Because he worked hard to do the peace in the Middle East and everywhere. Do you agree with that? I appreciate all efforts towards peace, and I shared with President Trump that when I spoke to Trump voters on Hillside Avenue, including one of whom was a pharmacist that spoke about how President Trump's father actually went to that pharmacy not too far from Jamaica Estates, that people were tired of seeing our tax dollars fund endless wars. And I also believe that we have to follow through on the international human rights, and I know that still today those are being violated, and that continues to be work that has to be done no matter where we're speaking of. We're working with everybody in the Middle East. That's another thing I think we have in common. We want to see peace in the Middle East, and we actually have now for the first time peace in the Middle East after 3,000 years, and now we're going to refine it, and I think you're going to see some very positive things happen.
आपने सुना कैसे जोहरान ममदानी ने व्हाइट हाउस के अंदर खड़े होकर के डोनाल्ड ट्रंप के सामने इजराइल और गजा को लेकर के सवाल का ऐसा जवाब दिया जिसको दुनिया के अच्छे बड़े बड़े लोग नहीं दे पाए। जोहरान ममदानी ने बोला कि आज अमेरिका इजराइल को फंड कर रहा है, जिसकी वजह से इजराइल गजा के अंदर जोनोसाइड कर रहा है, वहां के बच्चों को कत्ल गारत कर रहा है। अगर अमेरिका उसको फंड देना बंद कर दे तो इजराइल ऐसा नहीं करेगा, और जो अमेरिका जो उसको फंड कर रहा है वो हकीकत में अमेरिका के लोगों का टैक्स का पैसा है। वो पैसा इजराइल के अंदर नहीं बल्कि यहाँ के लोगों के ऊपर इस्तेमाल होना चाहिए। और फिर जोहरान ममदानी ने फिर आगे बोला कि डोनाल्ड ट्रंप से इस चीज के बारे में हमने बातचीत की है कि गजा को एक अलग मुल्क बनाना चाहिए, वहां पर जंग रुकनी चाहिए, और जो इजराइल को जो आप फंड कर रहे हैं वो जरूर रुकना चाहिए। उसी फंड की वजह से इजराइल गजा के अंदर जोनोसाइड कर रहा है। तो मोहतरम हज़रात, ये थे सवाल के जवाब तो डोनाल्ड ट्रंप जोहरान ममदानी ने बहुत अच्छी तरीके से दिए। लेकिन आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जो जोहरान ममदानी को हर कीमत में हराने की कोशिश कर रहे थे और जोहरान ममदानी हर तरीके से जीतने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनकी दुश्मनियां सिर्फ चुनाव तक के थी, चुनाव कैंपेन तक थी। जैसे चुनाव खत्म, नया मेयर बन गया, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद जोहरान ममदानी को व्हाइट हाउस के अंदर बुलाया, उनका वेलकम किया, उन तमाम सवालात के जवाब दिए और कहा कि जो न्यूयॉर्क का जो फंड है हम देंगे और ज्यादा फंड देंगे ताकि वो न्यूयॉर्क के लोगों के लिए ज्यादा अच्छा काम करे। और हकीकत में यही होता है लोकतंत्र। आप चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव के दरमियान में आप एक दूसरे को जो भी कह सकते हैं कह दें, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो गया आप ऐसा ना करें कि आप जो अब हुकूमत के अंदर आकर के बैठ गए और जिन लोगों ने आपको बुरा वाला कहा फौरन उसको जेल के अंदर डाल दे, जैसे कि आज भारत के अंदर ऐसा ही होता है। हकीकत में वही लोकतंत्र मुल्क है जिसने चुनाव के दरमियान में जो बातें बोली बस वहीं तक सीमित रखे, आगे दोनों साथ मिल करके देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करें।